So my desktop is now visible to all of you, and then we will start this AutoCAD software. I have already started. So here now we will start with this. So first of all, in previous session, we have seen about the new thing that is called as ऑर्थो मोड. सबसे पहले हमने ऑर्थो मोड देखा था, जहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन निकालने के लिए आसानी से काम कर सकते हैं. सो वी विल जस्ट सी दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट स्टार्ट द लाइन कमांड. नाउ अगेन सम न्यू थिंग्स आल्सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. जब भी हम लोग कोई कमांड स्टार्ट करते हैं और उसको बंद करने का है तो हमको एंटर प्रेस करना पड़ता है. सो दैट इज द थिंग. सो उसके लिए हम लोग स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं. तो ऑलरेडी दैट वी हैव सीन. So now I will start line command, and now I can draw all these type of lines. Where I will click, the lines will get drawn. But now I want exact horizontal line. So I have to adjust my mouse, and it is not possible that I will be able to draw the exact horizontal line. And for that purpose, we have seen that there is a simple way that you can press function button F8 from the keyboard. So now from the function button, I will press F8. So now you can just see that my cursor is at the another location, but ortho mode was on, and now the line is automatically getting perfectly horizontal. So this is the advantage. Similarly, it is also applicable to vertical also. Though I am moving my mouse somewhere, but that line will be only drawn in the vertical line only. So in this way, for drawing perfect horizontal and vertical line, we can use line command ortho mode. So that is the, you have to remember, whenever you want exact horizontal line or exact vertical line, so you should always use ortho mode. So I will now press space bar to end the command. Now here you can observe that this is the button ortho mode. So first button was infer constraint, then second was snap, third was grid, and fourth was isometric mode. So this mode can be on and off from there only. So that is the important thing now you have to remember. So yesterday we have also seen the construction line command. Construction line को कैसे निकालना है वो भी हमने देखा है. Now I will delete all these lines, and then we will go for construction line. So in the draw menu, I have to use this command, construction line. So you can see that whatever the logo was there, this construction line is unlimited at the both the ends. So this is a infinite length line. So that is for reference purpose. हम लोग जब ड्राइंग शीट पे रफ काम करते हैं तो फेंट लाइन निकालते हैं और फिर उसको डार्क लाइन से ज्वाइन करके हमारा मेन ऑब्जेक्ट निकालते हैं. सो सेम इज द पर्पस. टू ड्रॉ द बिल्डिंग प्लान, you can just see on the screen here. To draw the building plan, we can use this type of these red lines. Whatever the red lines are shown, that red lines are actually the construction lines, and then by referring to that construction line, then we can draw our other lines. So that already I have seen. So I will start here construction line, and just I will click just horizontal or vertical line. So because now ortho mode is on, so these lines are construction lines are now becoming horizontal and vertical. But now I will close that ortho mode, and now again I will start construction line command. So in the construction line, I can click anywhere, but you can draw a line of unlimited length. I will click here and here, so this will be unlimited length. Or I can also have vertical point and now here. So in that way, you can observe that these lines are unlimited in length. आप किधर भी घुमाएंगे ड्राइंग को तो भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन आर पार होने वाली है. So this is that unlimited length line, infinite length line can be drawn by using construction line command. So in that line command, there are various options already we have seen. So when we start the construction line command, then you have to read this command line. Now in the command line, construction line is mentioned as X line. So that you have to remember, construction line is also called as X line. So this is the bold letters X line are shown on the command line. So this specifies the name of the command, what we can type on the command line. Then there is a next action given. So that is called as specify a point. यानी आगे की स्टेप क्या है, मुझे एक पॉइंट क्लिक करना है, इसीलिए यहाँ पर लिख के आया है specify a point. Or after that R was written, and then in the bracket, square bracket, there are various words are given. So all these words, they are the option of this command. Means here 1, 2, 3, 4 and 5. So construction line has 5 options. Now for every option, there is one capital letter was given. So for this HOR, H is capital, here V is capital, here A is capital,
Here B is capital, here and OA is capital. So all these options can be used by using this capital letter typing here at the command line and pressing enter. जिसमें से जो भी ऑप्शन यूज करना है आपको, उसका कैपिटल लेटर हम लोग या स्मॉल लेटर कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप, और एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन उस कमांड के अंदर यूज हो जाएगा. नाउ आई सिंपली ड्रॉ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन लाइन. अभी ये कंस्ट्रक्शन लाइन मैं इस प्रकार से निकाल सकता हूँ, या इधर से मैं इधर ऐसी तिरछी लाइन में कंस्ट्रक्शन लाइन की निकालता हूँ. सो कंस्ट्रक्शन लाइन, आई विल जस्ट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, और यहां से मैं लाइन निकालूंगा. बट नाउ हियर, sorry, construction line command, then click here, and this is the construction line. But by using the command line option we can use various commands. So that already we have seen. construction line में हम लोग HORH टाइप करेंगे तो horizontal construction line निकलेगी. V फॉर वर्टिकल लाइन, A फॉर एंगल लाइन. जैसा एंगल वाला ऑप्शन यूज करना है तो कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए भी टाइप कर सकते हैं आप कमांड लाइन पे. ए टाइप करने के बाद में एंटर बटन दबाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे एंटर द एंगल ऑफ एक्स लाइन, यानी एंगल का लाइन, एक्स लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन का एंगल पूछा जाएगा. सो नाउ आई विल टाइप सपोज 30 डिग्री एंड एंटर. एंटर बटन दबाना 30 के बाद में भी कंपल्सरी है. सो नाउ माई लाइन विल बी ऑटोमेटिकली 30 डिग्री इंक्लाइन. सो इन दैट वे construction lines can be drawn at an given angle. And similarly we can also use bisect and all these. So that already just I have taken the review. Then we have also seen the ray command. So this is here again ray command. तो रे कमांड में एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी तरफ अनलिमिटेड लंबाई होती है, इसलिए एक ही पॉइंट से निकलने वाली कई सारी लाइंस हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं. सो वन लाइन that is ray, it is one point is fixed and the other point is unlimited length. So in that way these lines are also used for taking the projections. प्लान के प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाना है, सो दैट वी कैन ऑल्सो ड्रॉ ए वर्टिकल रे. और एलिवेशन के प्रोजेक्शन साइड व्यू के लिए ले जाना है, सो वी कैन ड्रॉ ए होरिजेंटल प्रोजेक्शन लाइन. सो दैट कैन बी ऑल्सो ड्रॉन बाय द रे कमांड. सो दिस टू कमांड ऑलरेडी वी हैव सीन. नाउ विथ दिस नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू नोट डाउन टुडे we will go with rectangle command. So you have to note down in your notebook. So rectangle command can be drawn by typing RECTANG. So either you have to type RECTANG at the command line, और हम लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं. सो रेक्टेंगल की कमांड शुरू हो जाएगी. यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सो आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दो ही पॉइंट क्लिक करना है. सो ऑटोमेटिकली यूर रेक्टेंगल विल बी गेट ड्रॉन. सो दिस इज वेरी इजी कमांड. सो नाउ आई विल क्लिक हियर. रेक्टेंगल कमांड मेरी स्टार्ट हो चुकी है. यहाँ पर एक क्लिक करूंगा मैं और इधर मेरा माउस खींच के मैं इधर क्लिक कर दूंगा. सो दिस इज ए सिंपल रेक्टेंगल आई कैन ड्रॉ. बट नाउ दिस इज नॉट द थिंग ओनली. सो आई विल जस्ट डिलीट ऑल these थिंग्स. सो वी विल सी दैट there are various options in the rectangle command. Now when we start this rectangle command, so first way you can just type 2 points. That is another one thing. But you can see in the command line there are various options. Now again I have started. So here it is given specify the first corner point. तो मैंने पहला एक पॉइंट क्लिक कर दिया. फिर अभी लिख के आ गया यहाँ पे specify other corner. So I have clicked next point. And in this way my rectangle was drawn. But you can just see here on the command line there are various options given here. So these options are chamfer, elevation, fillet, thickness and width. So these options now one by one we will observe. So whatever the options are given, they are in the square box, and whatever the capital letter was there, that you can use to start that option. So in this way now we will try various options. Now first we will try width option. अभी ये जो रेक्टेंगल की लाइन है उसकी थिकनेस मुझे बढ़ाना है. तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, आई विल यूज विड्थ ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रेश. सो हियर आई विल डिलीट दिस. अभी मैंने यहाँ से रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करी और एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया. सो दिस इज सिंपल रेक्टेंगल. बट नाउ अगेन आई विल स्टार्ट द रेक्टेंगल कमांड. तो मैंने स्पेस बार दबा के रेक्टेंगल कमांड को फिर से शुरू किया. नाउ आई विल गो टू विड्थ कमांड. सो टू इंक्रीज द विड्थ I have to type W on the command line and press enter. So with this, now the command line says that specify the line width for rectangle. So यहाँ पे अभी 0 0 triangular bracket में लिखा है. So this value is given in triangular value. So default value for the line width is now 0. If you want to change, so now I will type here suppose 5 and press enter. Now I have changed the line width. So now when I will try to draw the rectangle, now you can see that
my rectangular was having thick line. So in this way, you can change the thickness of the rectangle. So these are the two types of rectangle that we can draw using rectangle command. Now similarly, there is another option that we can see that is called as chamfer. chamfer यानी ये जो रेक्टेंगुलर है इसके कॉर्नर जो है उसको कट करना है हमको ऐसे. So to cut that corner, you have to use the chamfer option. But before that, now we will again go to the rectangular command and now we will type again W for the width. I will press enter and in the width, I will again width make it 0. So this you have to remember. Once we have changed the width of the line again, we have to make it 0. Otherwise, next time when you try to draw the rectangle, so that will be a thick rectangle. So I have made the value 0. Now this is the simple rectangle I have drawn. Now I will go to the chamfer option. ये जो रेक्टेंगल का कॉर्नर है इसको मुझे कट करना है, उसके लिए मैं chamfer ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं. So I will draw start rectangle command and now on the command line I will type C for the chamfer and I will press the space bar. So now this chamfer option was activated and here it was written in the command line that specify the first chamfer distance. So I have to type first chamfer distance here. So approximately now I will just type here as 20 and press enter. So this you have to remember, this is first chamfer distance. So पहला distance कितना रहेगा वो बताया मैंने. 20 के बाद में मैंने enter press किया तो अभी मुझे पूछा जा रहा है यहाँ पे specify the second chamfer distance. So I have to specify second chamfer distance. I will also type 20 again and I will press enter. So I have given first and second distance as 20, 20 and now you can observe the rectangular command. Now I will try to draw the rectangle. So you can see that my corners are get chamfered. So this is the difference. So now corner was get chamfered. So this type of rectangle if you want to draw with a chamfered corner, so you can use chamfer command. तो इस प्रकार से हम लोग हमारे कॉर्नर को चपटा करके ऐसे वाला रेक्टेंगल हमको बनाना है तो हम लोग ये chamfer ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ विद द chamfer ऑप्शन ऑल्सो वी कैन इंक्रीज द विड्थ. So now I will again go to rectangle command and in that I will type now W and press enter and now this time I will again type the command line width as 5 and press enter. So now you can just see that now also I will try to click here and click here, but this time the rectangle was there but the thickness was increased and chamfer was already there. तो अभी 20-20 का chamfer भी मेरा है. फर्स्ट chamfer इसका मतलब ये होता है कि आप यहां से x डिस्टेंस 20 और x डिस्टेंस y डिस्टेंस 20 यानी कॉर्नर से 20-20 का डिस्टेंस लेके मैंने ये रेक्टेंगुलर बनाया है and width also I have changed. So in this way these are the two different types of rectangle that we can draw. So we have seen here that this simple rectangle, then simple rectangle with thickness, then chamfered rectangle and chamfer rectangle with thickness. So this type of 4 options already now we have seen. Now I will just scroll it down and again now I will try that to change the fillet of the rectangle. ये जो corner है rectangle के ये मैं गोलाकार भी कर सकता हूँ. So I can make it rectangle. So again I will go to rectangular command I have started and now then I will again go to width option. So W में जाऊंगा मैं thickness 0 कर दूंगा. So width मेरी 0 हो गई और अभी मैं fillet के लिए F टाइप करूंगा. So I will type F and enter. So once I have given the fillet, so automatically here that 20 value as he has taken as the radius of the fillet. Fillet का मतलब है गोलाकार करना उस कॉर्नर को. ये जो रेक्टेंगल का कॉर्नर है ये शार्प कॉर्नर है, इसको गोलाकार सर्कुलर बनाना है इसको हमको. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी फिलेट कमांड दे दिया मैंने और फिलेट ऑप्शन में मैंने 20 टाइप कर दिया. अब यहाँ पर मैं यदि रेक्टेंगल बनाता हूँ सो यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस दैट नाउ माय रेक्टेंगल वाज सॉरी आई हैव टू गिव द वैल्यू. So rectangle command F for fillet and then 20 for fillet value and press enter. Now I will draw the rectangle so it will get now having rounded corner. So this type of rounded corner you can draw by using fillet option. अभी ये जो सर्कल है यहाँ का इसकी रेडियस 20 है. So now you can also now increase the width. So I will again press the space bar. तो फिर से रेक्टेंगल कमांड शुरू हो गई मेरी. अभी मैं फिर से I will F for fillet and then I will type the fillet radius as 20.
So just press enter, and now width W, enter, and now I will type 5 and enter. So I have also changed the fillet. Now you can see the changes that now the rectangle was there, but it was with the rounded corner. So in this way, simple rectangle, chamfered rectangle, and rounded rectangle. So these are the single line, and then we have increased the width so that also you can make this type of rectangle. So these are the three important options, that is chamfer, fillet, and width. So that we have seen. Now there are other two options, elevation and thickness. So that we will learn at the time of 3D drawing. जब 3D drawing देखेंगे तब हमारे लिए ये दोनों ऑप्शन हमारे काम में होने वाले हैं. अभी हमने चैम्फर, फिलेट और विड्थ का ऑप्शन देखा है. नाउ इन दैट ऑल्सो चैम्फर के अंदर हम लोग चैम्फर का डिस्टेंस अलग अलग भी दे सकते हैं. अभी मैंने यहाँ पे चैम्फर का डिस्टेंस 20 बाय 20 दिया है. So we can make that distance unequal also in the chamfer option. So for that, I will go to rectangular command, then I will go to width, and I will make the width as 0 again, and then go to chamfer option. C type किया मैंने, press enter. After chamfer, first chamfer distance यहाँ पे type किया, पूछा है, so that I will give as 20, enter, and then I will write down second chamfer distance as 30 and enter. So now you can see here the chamfer distance was different, and now try to draw this rectangle. So this rectangle is having different thing. So अभी यहाँ पर उसने x distance 20 लिया, y distance 30 लिया इस वाले कॉर्नर पे. So similarly again it was getting repeated. So their chamfer distance I have changed. So this you can do. And now again we will go to the rectangular command. We will W type for width option, and for width option I will type width as 5 and press enter, and now try to draw. So मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा. So you can see that अभी मेरा रेक्टेंगल निकला है, बट उसका जो चैम्फर का ऑप्शन है वो अलग अलग आ गया है. So in this way, so this type of 8 rectangulars, the different options you can try. So all of you have to take the screenshot of this. इस प्रकार के 8 रेक्टेंगल आपको टाइप करना और ड्रॉ करना है, ऑटोकैड में प्रैक्टिस करना है कि ऐसे रेक्टेंगल आपके बनने चाहिए. सो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that you can observe that and you can try this option. So I hope that you have completed that. So you can just type C in the chat box. So I will understand that you have taken the screenshot, and then I will proceed further. So you have to type C in the chat box to continue, and then we will start for the next command. So this is rectangular command, chamfer, fillet, and width. 3 options we have seen. So this is again one of the interesting thing. Now I will just want to delete this. So what I will do, I will draw a dotted rectangle. So dotted green rectangle, this is called as क्रॉसिंग विंडो बोलते हैं इसको. और सब सिलेक्ट कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट, एंड डिलीट बटन दबा दिया मैंने. सो दिस ऑब्जेक्ट वाज डिलीटेड. नाउ वी विल अगेन सी दैट हियर इन द ड्रॉ मेनू, जब हमने रेक्टेंगुलर कमांड स्टार्ट किए थे उसके बाजू में यहाँ पर एक छोटा सा एरो है. ये एरो का हम लोग यदि खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरी कमांड दिखने वाली है, दैट इज पॉलीगॉन कमांड. सो यू हैव टू नोट डाउन दैट देयर इज ए पॉलीगॉन कमांड बिसाइड रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल के बाजू में है यहाँ पर नीचे. So you have to open that triangle and you have to try polygon command. So you can just, now we will see. So there are 2 options for there to draw this type of polygon. Polygon यानी number of sides आप लोग ले सकते हैं अलग अलग. So मुझे पंचकोण, षटकोण, सप्तकोण, अष्टकोण, like that. Having a polygon means number of sides are different. So that type of polygon we can draw. So in the geometry there are 2 methods are there. So all you can see here that there are 2 methods. One, that polygon inside the circle. So this is a dotted circle is shown in the figure, you can see here, but that is shown dotted circle and polygon is inside that. अभी आपको यहाँ पर जो hexagon दिखाई दे रहा है वो dotted circle के अंदर दिखाई दे रहा है. So this is called as the polygon inscribed in circle. Inscribed means अंदर आने वाला. सो सर्कल के अंदर फिट बैठने वाला यदि मुझे पॉलीगॉन निकालना है तो मुझे पहली वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी. और देयर इज अनदर ऑप्शन दैट इज सर्कमस्क्राइब बाय सर्कल, यानी जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के बाहर से निकला है. सो पॉलीगॉन इज सर्कमस्क्राइब टू द सर्कल. तो जो सर्कल आप देंगे उसकी रेडियस आपको बतानी पड़ेगी कि ये इतने इतने रेडियस का सर्कल है.
उस रेडियस के सर्कल के अंदर बैठने वाला पॉलीगॉन चाहिए कि बाहर बैठने वाला पॉलीगॉन चाहिए, वो हम लोग निकाल सकते हैं. सो दैट वी विल नाउ सी हियर. सो आई विल स्टार्ट पॉलीगॉन कमांड. So now you have to note down the steps so that how they are changing. So you can see that here polygon command, here it was given that enter the number of sides. Now you have to also observe on the command line. So it was given enter the number of sides, and in the triangular bracket the value is given as 4. So now I want to draw a hexagon, so I have to type 6 and press enter. So now that polygon will be hexagon because I have given the number of edges or number of sides equal to 6. And now here I was asked that specify the center of the polygon. तो सर्कल का सेंटर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ. यू कैन सी दैट द पॉइंटिंग कर्सर वाज देयर. मेरा कर्सर अभी पॉइंटिंग वाला हो गया, उसमें अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स चले गया. नाउ दिस इज ए पॉइंटिंग कर्सर. सो आई हैव टू क्लिक द सेंटर. मैंने यहाँ पे सेंटर क्लिक कर दिया. जैसे मैंने सेंटर क्लिक किया वहां पर नीचे कमांड लाइन में लिख के आ गया अभी यहाँ पर. सो यू कैन सी एंटर एन ऑप्शन इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल. सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आई लिखा है, यानी आपका सर्कल इंस्क्राइब होने वाला है. यदि आपको सर्कमस्क्राइब करना है तो सी टाइप करना पड़ेगा. सो नाउ आई विल जस्ट प्रेस एंटर फॉर आई, यानी इंस्क्राइब होने वाला है मेरा. और अब मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ. दूसरा पॉइंट, मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा तो जो इमेजिनरी सर्कल है उसके अंदर बैठने वाला हेक्सागन यहां निकलेगा. एंड द कमांड वाज क्लोज. सो आई हैव प्रेस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. बस 2 ही पॉइंट मैंने क्लिक किए और वो सर्कल जो बना वाला इमेजिनरी उसके अंदर बैठने वाला रेक्टेंगल, अब ये पॉलीगॉन जो है हेक्सागन, दैट वाज नाउ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. सो दिस इज इंस्क्राइब्ड. नाउ दिस विथ दिस I am not knowing that what is the radius of that circle. So that with also with a given radius, how to draw that hexagon, that now we will see. So I will delete this hexagon now. Now I will again go to this polygon command. I will click here. So polygon command was started. Now enter the number of sides. Already value are 6. Now therefore hexagon will be drawn. So I will press just enter. अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी टाइप करना नहीं है क्योंकि 6 ऑलरेडी वहां पर है. So I will enter. तो मेरी कमांड आगे चली गई. So you have to also remember that in the command we have to, if you want to continue the command, you have to simply press enter also. That also is the learning now we have to remember. Now here it is given on the command line, specify the center of the polygon. So I will click here this center. Now once I have clicked that center, now option inscribe or circumscribe. So I will just press enter for inscribe. So I have pressed enter. Now it was given that specify the radius of the circle. तो मैंने अभी पिछले बार यहाँ पे क्लिक किया था, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई विल नाउ गिव द वैल्यू. सो आई विल टाइप हियर 50. तो 50 दिया मैंने रेडियस की वैल्यू एंड प्रेस एंटर. सो विद द 50 रेडियस सर्कल विल बी ड्रॉन एंड इनसाइड दैट द हेक्सागन विल बी ड्रॉन. सो दिस इज द हेक्सागन fitted in a 60 diameter 60 radius circle. So that you have to remember. So in this way, by giving the radius of a circle, we can draw this. Now we will go for circumscribe option. So again I will start the polygon command. Then I will press enter for number of sides 6. Enter. Then center of the polygon. So I will click here and then circumscribe. For circumscribe I will type C. So it will now get circumscribed. And now again it was asked that what is the specify the radius of the circle. So radius of circle again I will type 50. So 50 and enter. So you can see that in this case the polygon was inscribed. तो इसकी साइज छोटी हो गई है. And here in this case the polygon was circumscribed. तो ये सर्कल के बाहर से बन गया इसलिए इसकी साइज थोड़ी बड़ी है. So that you can note down the difference. Polygon inscribed थोड़ा छोटा बनेगा, polygon circumscribed थोड़ा बड़े बनेगा. So this type of 2 polygons you can draw with this polygon command. Now but इसकी जो साइड है ये हमको पता नहीं है. So also we should understand the polygon or hexagon of given side. तो जिसकी साइड हमको मालूम है वो वाला हेक्सागन कैसे निकालना, that now we will see here. So for that purpose we must know the what is the side of the polygon या hexagon. हेक्सागन की साइड मुझे समझ लो दी है कि 50 विड्थ होने वाले जो हेक्सागन है ऐसा होना मुझे रेगुलर हेक्सागन. सो दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, बट इसकी विड्थ कितनी है मुझे पता नहीं है. बट नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ ए हेक्सागन हैविंग width of the edge as 50.
So for that, what is the procedure? That now we will observe. So I will start polygon command, and on the command line already there was a 6 sides, so I will just press enter. Then there you can see that in the rectangular box edge option was there. So this edge option is required for this purpose. So for edge option I have to type here E. So I will click on the command line and type E and press enter. So now I will go to the edge mode. So you can observe here it is what written that specify the first endpoint of the edge. So I will click here, and for the second endpoint now I will type 50. So I will type 50. So other दूसरा point मेरा 50 दूरी पर आ जाएगा अपने आप से, and press enter. So now you can ensure that so from this point to this point this distance will be 50. So this is a polygon hexagon having side is equal to 50 millimeter. Now I will try with the 100. So again I will just see that command procedure. So I will go to polygon command, then number of sides are 6, so I will press enter. Then for edge mode I will type E, press enter, then specify the first endpoint. So I will click somewhere here, and then for second point I will type 100. So that 100 will be taken as a, so you can just see that now my value is 100. But because I have placed the mouse cursor in inclined direction, so automatically इसकी जो direction है वो inclined हो चुकी है. So that also you have to take care that this baseline should be horizontal. ऐसा चाहिए आपको, तो आपको फिर ऑर्थो मोड ऑन रखना पड़ेगा, तो आपके सारे रेक्टेंगल होरिजेंटल निकलेंगे. So for that now we will try with that also. So I will make it ortho mode on. So I will just press it here on the mode button. I will चौथा वाला जो मोड है इसको मैं शुरू कर दूंगा यहाँ पर. So now ortho mode was started. Here it was written ortho mode on. Now I will go to polygon command. So here polygon command was started. Now I will change the number of sides. So here number of sides I will make it 5 and enter. So मेरे पंचकोण निकलेगा अभी. I will able to draw pentagon with edge. So I will type E, enter, and now I will click here first point. So because now my ortho mode is on, you can just see that you move anywhere, but your pentagon will be only like this or like this. So उसकी जो bottom की edge है वो vertical आएगी या फिर horizontal आएगी. And now you have to give the value. So I will type 100. तो जो base है उसका वो 100 हो जाएगा, and that pentagon will be drawn with base is equal to 100, and that base is horizontal. So this type of pentagon also you can draw. Suppose ये base जो है उसका vertical चाहिए, so I have to you again start pentagon command. Then in that pentagon command 5 is given already, so press enter for pentagon. Then type E for edge mode, and edge पहली point click कर देंगे यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट अभी ऊपर छोड़ देंगे उसको लेके, इधर या इधर भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं वर्टिकली. एंड नाउ आई विल टाइप 100, बट नाउ माय माउस कर्सर इज एट द बॉटम, एंड बिकॉज ऑफ ऑर्थो मोड दिस बेस लाइन वाज ऑटोमेटिकली गेटिंग वर्टिकल, एंड प्रेस एंटर. So this base is now 100 length and vertical, and then the regular pentagon you can draw. So in this way you have to try to draw this type of various objects. So I hope that you have clearly understood the polygon command. So in the polygon command there are 3 options. One is circumscribe option, inscribed option और edge option. तो edge mode से हम लोग जितनी डायमेंशन दिए उतने डायमेंशन का रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन हम लोग निकाल सकते हैं. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ए ट्रायंगल और ए स्क्वायर or a pentagon or a hexagon or a septagon or a octagon also. So I hope that you don't have any doubt. So in the chat box, if you have any doubt, so you can just type your doubt in the chat box, or otherwise you can type C for continue, and then we will move to the another command. So if anybody is having any doubt, you can type that doubt in the chat box if you want to ask anything, or otherwise you can type C in the chat box so that I will continue to the next command. So today we have seen that. So now you have to be ready with the notebook, and there is a question in the assignment. Question है assignment के लिए.
So for that purpose, write down the question. So I am quoting you the assignment question now here. Write step by step procedure. Write step by step procedure to draw a regular pentagon. To draw a regular pentagon of side is equal to 60 millimeter. Write a step-by-step procedure to draw a regular pentagon of side 60 millimeter having its one base vertical. तो एक लाइन हमारी वर्टिकल चाहिए उसकी बेस की, और 60 मिलीमीटर साइड होने वाला जो रेक्टेंगल है उसको हमको ड्रॉ करना है, एंड उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा वो आपको लिखना है. ना हाउ टू, आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. सो हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू डू दिस, ये जो स्टेप्स है वो कैसी लिखना है आपको नोटबुक में इसका आंसर. सो दैट नाउ वी विल सी हियर. तो हमको 60 साइड का रेक्टेंगल और पेंटागन चाहिए और उसका बेस वर्टिकल होना चाहिए. सो व्हाट आर द स्टेप्स? So here you have to remember. Now I will just show you that how it can be done. So I will just draw all of this pentagon. Then again I will go to just so what I will do, I will start polygon command. Now polygon command, I want pentagon, so I will type 5 and press enter. So now it was given that the edge mode, because we have given the side of that rectangle was pentagon was 60. So I will type E and then press enter, and then I will click here the first point, and now I want vertical. So I have to make ortho mode on, and then ortho mode on, and then I will type was hold the mouse downward direction and type 60 in the command line and press enter. So this will be a pentagon having vertical side and with side 60 mm. Now how to draw these steps? ये right steps कैसे लिखना है? So this is the important thing. So what you have to do, you have to press function button F2. So F2 फंक्शन बटन शुरू करने में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कौन सी स्टेप्स यूज की है. So these steps are given here. So you can see here that this is the step first. What that step? Dash polygon. So all you have to remember, dash polygon, enter number of side, triangular bracket में 5, 2 कोलन और 5. So this is the first answer you have to write down. ये पहली लाइन लिखना है आपको आंसर के अंदर. Then उसके बाद में यहाँ पर लिख के आ गया specify the center of the polygon or edge. So we have typed small e for that. So this is the second step, and then it was given specify the first end point of the edge. तो मैंने क्लिक कर दिया स्क्रीन पे कहीं भी, और फिर उसके बाद में लिख के आ गया specify the second end point of the edge. So I have typed 60 and press enter. So in this way, by opening this text window, F2 दबा के टेक्स्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं और आपने सारा प्रोसीजर कैसे किया है उसको हम लोग देख सकते हैं. एंड यू कैन राइट डाउन दिस 4 स्टेप्स 1, 2, 3 and 4. So these are the 4 steps for your answer. So this is the way to find out how this command line can be used to understand the step-by-step commands. So later on when we are learning in advanced mode, तो वहां पे कई सारी कमांड्स की स्टेप्स कैसी याद रखना है उसके लिए हम लोग टेक्स्ट विंडो का यूज करने वाले हैं. सो दिस वे वी हैव टुडे सीन दिस रेक्टेंगल कमांड एंड polygon command, and with this we can draw different objects. Now suppose I want to draw octagon. So that again what I can do, I will start polygon command. The number of sides I will type 8, then press enter, and then I will go for edge option. So E, and then specify the first point. So मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अभी दूसरे पॉइंट के लिए मुझे ऑर्थो मोड मेरा शुरू है, and I will type 60. So this will be a octagon of side 60. So this way you can also draw octagon. So I hope you have understood this
polygon command also. Now for this purpose you have to remember that ये जो रेक्टेंगल है इसको हमको थिक करना है. अभी थिकनेस कैसी बढ़ाएंगे इसकी? सो दैट ऑल्सो इज ए चैलेंज. पॉलीगॉन बनाया मैंने लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है विड्थ वगैरह का बढ़ाने का. सो हाउ यू कैन इंक्रीज दिस? सो दैट इज वन सीक्रेट. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ पर मैंने अभी क्या किया है, I have selected this polygon. This is a pentagon, and now this is the properties panel. Now on this property panel, there is polygon was now written here. So you can just see because I have selected this. So these options are available. And now here there is a one command line. It is called as global width. So this you have to remember, global width. So with this global width, I will click here, and global width was at present is 0. Now I will type 5 there and I will press enter. So you can observe the changes that now this pentagon thickness was 5 mm. तो ये 50 इसकी लंबाई है बेस की, यह 60 है और इसकी विड्थ मैंने 5 mm बढ़ा दिया. So this can be seen that same can be done for this octagon also. So I will select this octagon. Once the selected was done, then you have to observe this properties dialog box. In that you have to search for global width. So this is a global width, and now I will click here, and in the global width you can type the thickness of that line. So I will type here 10. तो अभी मेरी width 10 हो जाएगी. You can observe the changes. So you can see that. So this pentagon is having width of 5 and this octagon is having width of 10. So in this way you can change the width of the line of the polygon. So इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल और पॉलीगॉन कमांड की प्रैक्टिस आपको करनी है. 6 प्रकार के रेक्टेंगल आप कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बताया. Along with that, now there is an exercise in the practical. So you have to note down that exercise question. I am writing that question in the chat box also. So you have to write down exercise question. You have to write down, draw falling polygon with given size of base. So first you have to draw ट्रायंगल. ट्रायंगल की जो साइड रहेगी वो ब्रैकेट में मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ, ट्रायंगल ऑफ साइड 100 by 100. देन यू हैव टू ड्रॉ स्क्वायर. स्क्वायर की साइज रहेगी 80 by 80. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ पेंटागन. तो पेंटागन की साइड रहेगी 70 मिलीमीटर. देन यू हैव टू ड्रॉ हेक्सागन. हेक्सागन की विड्थ रहेगी 60 मिलीमीटर. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ सेप्टागन. सेप्टागन की विड्थ रहेगी 60 मिलीमीटर. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ ऑक्टागन. ऑक्टागन की विड्थ रहेगी 50 मिलीमीटर. एंड देन आफ्टर दिस increase the width of all the polygons. Increase the width means यहाँ पे आपको रिमेम्बर करना है line width. Increase the line width of the polygon is equal to 5 millimeter. So question was given in the chat box. Draw following polygon with given size of base. ट्रायंगल 100 mm की साइड रहेगी. ट्रायंगल 3 साइड 100 के रहेंगे. स्क्वायर 80 के रहेंगे. पेंटागन का बेस 70 का रहेगा. हेक्सागन का बेस 60 का रहेगा. सेप्टागन का बेस 60 का रहेगा. ऑक्टागन का 50 का रहेगा. इंक्रीज द लाइन विड्थ ऑफ द पॉलीगॉन एज 5 mm. अब ये वाले एक्सरसाइज में आपको और एक चेंज करना है. सो व्हाट यू हैव टू नीड टू ड्रॉ इज, सो रिपीट सेम एक्सरसाइज with same question with base having angle of 45 डिग्री. तो अभी आपके बेस का एंगल
45 डिग्री होना चाहिए, यानी जो पॉलीगॉन बनाएंगे उसका जो बेस है 45 डिग्री का होना चाहिए। और उसके हिसाब से आपके सारे ट्रायंगल भी, स्क्वायर भी, पेंटागन भी, रेक्टेंगल भी, हेक्सागन भी, सेप्टागन भी, सबकी जो एक साइड है वो एक साइड 45 डिग्री की आनी चाहिए। इसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। सो दिस इज द एडिशन थिंग। सो यू हैव टू ड्रॉ दैट with the base having angle of 45 degree. So how to draw that? और उसके लिए फिर मैं अगले सेशन में हम लोग वी विल हैव ए क्वेश्चन आंसर. So in this way we have today seen the two important command, that is rectangle and polygon command. So I hope that you have enjoyed the today's session. So today we will stop here. So again, if you are having any doubt or you want to ask any question or you want to share your view, so you can type in the chat box. If there is any question or doubt or any sharing, so you can type that in the chat box, or you can raise your hand so that I will be unmute you and then you can share your view. So with this Sonal Dhage was there. I am just asking to Sonal Dhage to unmute yourself and just give your feedback on this. Yes, please give your feedback about this online class. Sir, I can understand all the concept you teach us, and the class is very helpful for me. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, Anjali Gawai, you have to share your Anjali Gawai. You have to unmute yourself and just give your feedback regarding this online class in one sentence. Anjali Gawai, you have to unmute yourself and give your feedback. येस सर, खूप चांगला आहे सर क्लास. Are you आणि practicing तुम्ही these things? आणि तुम्ही गाईड केलं खूप छान. समजलंय पूर्ण कॉन्सेप्ट. Thank you, Anjali. Next, Gayatri Kade, you can just unmute yourself and give your small feedback. Gayatri Kade. Gopal Nandurkar, you have to unmute yourself and give your feedback for this online class. Yes, Okay, Gopal. sir. The webinar is very knowledgeable, sir, and the basic concept is very clear as compared to other courses and other coaching classes. Thank you, Gopal. So that this see that when you are going for advanced use of AutoCAD, so small advanced things are small things, basic things are very much important. So Mohini, you can unmute yourself and give your small feedback. Vaishnavi Rase. Sir, class is very excellent, sir, and thank you, sir, for giving this session. Are you practicing this at your home? Yes, sir. Thank you, Mohini. Next, Vaishnavi Rase, ask. You can unmute and give your feedback. Yes, Vaishnavi. Your voice is not audible. I think there is mic problem. Yes, I think there is a mic problem for your mobile or video, so your audio is not okay. So thank you guys. Today we are having a, now see, every day we will just see small things. ज्यादा कमांड्स एक साथ में हम लोग नहीं सीखेंगे. We will see that very small but important all the options for the command. I have already seen that there are many AutoCAD classes are there, but they are not giving you the detailed options of every command.
सो उसके वजह से कई सारे काम करते समय हमको हमारी स्पीड हम लोग ज़्यादा वेरिएट नहीं कर सकते. सो we are trying that for every command all the options should be known to you, and that will be give you good insight regarding the basics of the AutoCAD. So thank you for joining today's session. I hope that this is a nice interaction. Tomorrow there is a holiday of the 15th September, so we will meet again on the 16th September, and then after 16th there will be regular sessions every day. So you have to be ready for that. Whatever the things still up till now we have seen, you have to get it practiced, so that when we are jumping for that actual building drawing, तो आपको उस समय ये सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी याद आने चाहिए. So remember, that is important thing. So you can just type your feedback in the chat box, and then we will close the today's session. So you can give your feedback, good, better, best, nice, see you, thank you, bye bye, and then we will close the today's meeting. I will stop my sharing, screen sharing. So thank you guys for your feedback. Tomorrow there is a holiday, and on the 16th September we will meet again with the next 2 new important good commands. Thank you once again. See you soon.